Good morning, dear student. How are you? I hope you are well at home. Dear student, today I will explain lesson number 6 for class 8th, combustion. What is the combustion? Dear student, combustion क्या होता है? So let's start. Have you seen when magnesium ribbon or sodium keep in a water, it will start burning and produce heat and light. Have you also seen in laboratories when calcium hydroxide or calcium carbonate keep in water, it will produce heat. This is called combustion. Means combustion क्या होता है बच्चों? कंबस्शन का मतलब जब कोई पदार्थ, जब कोई वस्तु या जब कोई एलिमेंट वायु में या एयर में जलता है और जलने के पश्चात लाइट तथा हीट प्रोड्यूस करता है तो इसे हम कंबस्शन कहते हैं. मीन्स व्हेन एनी सब्सटेंस और मटेरियल और एलिमेंट burn or catch fire in air and start producing heat and light is called a combustion. There are very examples or several examples around your daily life of combustion, like burning of LPG gas cylinder or burning of petrol and diesel inside the vehicle's motor car, producing electricity, heat and light. What is necessary for combustion? यानी किसी वस्तु को जलने के लिए किस चीजों की आवश्यकता है? So dear student, there are few requirement for combustion. First is a light. First is air. Air is must requirement for the combustion because substances or material catch fire or start burning presence of oxygen. When oxygen present in sufficient quantities, that time substances are start burning. मतलब बच्चों किसी भी पदार्थ को जलने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की. अगर ऑक्सीजन है तभी कंबस्शन होगा, तभी कोई पदार्थ जलेगा. यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अ ऑक्सीजन. सेकेंड, इग्निशन पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर. व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर? अ लोअर टेम्परेचर which necessary for combustion of any substances is called a ignition point. बच्चों प्रत्येक पदार्थ को जलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की नेसेसरी होती है. अगर वह मिनिमम एनर्जी उस सब्सटेंस को मिल जाती है तो वह जलने लगता है. यानी सेकेंड पॉइंट इज द इग्निशन पॉइंट. First is the oxygen, second is the ignition point, and last is the heat. Heat. Heat is the last requirement for combustion. So there are three important points necessary for combustion of particle, substance or material. Number 1, oxygen. Number 2, ignition point. Number 3, heat. Next question, how do we control combustion? अगर बच्चों कहीं आग लग जाए, कोई वस्तु जल रही है तो उस पर हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उस पर कैसे काबू पाएंगे? Have you ever seen in houses, in factories, in shop or in forest catch fire for a long time
and caused several loss. So how can we control these fire, these combustion, which make huge loss in our society? Have you seen, dear student, whenever, anywhere catch fire in houses, factories, shop, or anywhere in your city, villages, or country, first of all, we have to call fire brigade. Have you seen when fire brigade come, what he doing? He start spraying water on the fire. Dear student, water is the first extinguisher which control fire. यानी बच्चों अगर कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर कंबशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उस पर वाटर डालना, वाटर स्प्रे करना। क्योंकि वाटर जो जब स्प्रे आप करेंगे तो उस स्थान का, उस सबस्टेंस का इग्निशन पॉइंट घट जाएगा जिस पर वह जल रहा है, और जैसे इग्निशन पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। यानी फायर ब्रिगेड स्टार्ट स्प्रेइंग वाटर which minimize, which lower the ignition point of substance which start fire, which start combustion and fire control. But water is not a best extinguisher for all the things. Whenever catch fire on paper, wood, plastics, that time water is the best option extinguisher to control fire. But whenever fire or combustion on electrical equipment, that time electrical equipment, petrol and diesel, that time we have to not use the water as a fire control material. That time we have to use carbon dioxide CO2 on electrical equipment, petrol and diesel, which control the fire. I hope, student, you are well understood. Thank you.